Hello, dear students. How are you all? Today, we are going to learn about phrases and clauses. Most of the students have lots of confusion about phrase and clause. So, in this video session, I will make you clear regarding what is phrase, how many types of phrase, how do we use phrase in the sentence, what is clause, what is the difference between phrase and clause, and types of clause, etc. So first of all, take a look of general definition of phrase. A group of words which makes sense but not complete sense is called a phrase. In this definition, we came to know that a phrase is a group of words. Generally, it is a part of sentence and it does not contain a finite verb. And when these phrase, it does not give any meaning, it does not give any sense if it is used alone. So let's see some example of the phrase on the table. This is the group of words having preposition and noun. Now let's see next example, of great beauty. This is a group of word having adjective and noun. Now the next example, under the table. In this phrase, this is a group of word having preposition and a noun. So this group of words, that means this phrase does not give any sense if it is used alone. But when we use this phrase in a sentence, it gives some meaning. Okay. Now let's see the example. A cat is sitting on the table. Here the same phrase is used, on the table, but here because this phrase is used in this sentence, so it gives the meaning. A cat is sitting on the table. Now let's see the another example. It was sunrise of great beauty. Okay, so in this sentence this phrase gives the meaning. Next example, the cow sat under a tree. Similarly, in this sentence, the phrase under the tree, okay, gives the meaning. So I think students, आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि फ्रेज जो होते हैं वो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, बट जब उन्हें हम लोग सेंटेंस में यूज़ करते हैं तभी वो हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं. ओके. नाउ phrase can act as an adjective, an adverb and a noun. phrase को एक adjective और एक adverb और एक noun की तरह यूज़ किया जा सकता है. जब हम लोग सेंटेंस में phrase यूज़ करते हैं तो वो एक adjective की तरह हो सकता है वर्क करे, एक adjective adverb की तरह या एक noun की तरह यूज़ किया जा सकता है. Adjective phrase. An adjective phrase is a group of words that does the work of an adjective. Adjective phrase ऐसे group of words को कहते हैं जो क्या करते हैं, जो sentence में adjective की तरह work करते हैं. Okay, let's see some example. Example से आपको ये clear हो जाएगा कि किस तरह से ये adjective की तरह work करते हैं. My mother is a woman of religious nature. Okay. So if we say that my mother is a religious woman, so religious is an adjective, but the same word is used as a verb like of religious nature. So same word is used as a phrase. Okay. My mother is a woman of religious nature. Here in this sentence, of religious nature is a phrase. Okay, adjective phrase. Let's see some another example. In summer, we wear clothes made of cotton. Okay,
So similarly, in this sentence, made of cotton is an adjective phrase, and when we use this sentence, it works as an adjective. Okay, so this is called adjective phrase. In summer, we wear clothes made of cotton. Now come to the next type of phrase, adverb phrase. An adverb phrase is a group of words that does the work of an adverb. एडवर्ब फ्रेज उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो हमारे सेंटेंस में एडवर्ब की तरह वर्क करते हैं. ओके, एडवर्ब जनरली क्या होते हैं? एडवर्ब जो हमारे वर्ब को, जो सेंटेंस में वर्ब को या एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, है ना, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं. तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस में क्या है. ही स्पोक इन अ रूड मैनर. ओके, तो सिंपल सेंटेंस में हम लोग ये बोल सकते हैं ही स्पोक रूडली. रूडली इज एन एडवर्ब, बट when that very adverb is used as an adverb phrase, okay, in a rude manner. So he spoke in a rude manner. In this sentence, in a rude manner is an adverb phrase. Now in the next sentence, the teacher called him in a loud voice. Generally we say that the teacher called him loudly. So the word loudly is adverb. So we use that very adverb as an adverb phrase. The teacher called him in a loud voice. Here in this sentence, in a loud voice is an adverb phrase. Clear? Now come to the noun phrase. A noun phrase is a group of words that does the work of a noun. नॉन फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में नॉन की तरह वर्क करते हैं, है ना. चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स. आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स इज अ वर्क एज नाउन. रीडिंग स्टोरी बुक वर्क्स as a noun. So in this sentence, reading story books is a noun phrase. Now let's see the another example. Playing in the national team. Playing in the national team is very prestigious. So in this sentence, playing in the national team works as a noun. Okay, works as a noun phrase. So we call it a noun phrase. Okay, and here playing in the national team is very prestigious. So this sentence consists of a noun phrase. Clear, students? Now come to the clause. First of all, let's see the definition of clause. A group of words that contains a subject and a predicate is known as a clause. So clause is a group of words that is a subject, that has a subject verb combination, and a clause may or may not stand on its own. That means a clause may give, okay, or does not give a complete sense. Okay, now let's see some example. When I was going to market. When I was going to market, it has a subject and a verb. It has a subject, I. Here I is a subject and a verb. Okay, it is also a meaningful group, but it lacks entire sense. That means it does not give the entire sense, it does not give the entire meaning. When I was going to market, okay, what happened? What happened after that? When I was going to market, what happened after that? So here the entire meaning is, lacking. Now let's see the other example. So I did not go to school. So this group of words also has a subject and a verb, and it is also a meaningful group, but it lacks entire sense. Okay, so I did not go to school. Then what happened before that? So when I was going to market, I met my friend. Okay, so when we add something after this, it makes our sense clear. When I
वॉज गोइंग टू मार्केट, जब मैं मार्केट जा रहा था, आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्लाउज है, क्लाउज में सब्जेक्ट भी होते हैं, क्लाउज में एक वर्ब भी होता है, बट ये जो क्लाउज है ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है ना, मीनिंग है इसका, लेकिन ये पूरी तरीके से इंटायर मीनिंग नहीं दे रहा है। आप यहाँ पे देखो, व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट, जब मैं बाजार जा रहा था। अब इसे किस तरह से यूज़ किया गया, व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट आई मेट माई फ्रेंड। अब ये कंप्लीट मीनिंग हो रहा है, अब ये कंप्लीट मीनिंग ये दे रहा है ये सेंटेंस कि जब मैं बाजार जा रहा था, ठीक है, आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला। Similarly, in the second clause, so I did not go to school. Okay, I was ill, मैं बीमार था, so I did not go to school, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। अब यहाँ पे है so I did not go to school, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। अब ऑल ऑफ ए सडन कोई आपसे ये कहे so I did not go to school, तो आप बोलेंगे क्या बोल रहे हो, दैट मीन्स सेंस क्लियर नहीं था। बट वेन दैट वेरी पर्सन सेज यू, okay, I was ill so I did not go to school, it makes the clear sense, okay, कि वो बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं गया। इससे इंटायर सेंस क्लियर हो जाता है। Now come to that, clauses are mainly divided into two types based on their usage. Clauses जो होते हैं ना, mainly on the basis of use of the clause, there are two types of clauses. First is independent clause and the other is dependent clause. Okay, an independent clause actually a complete sentence, it does not depend or on any other sentence to make it complete. इंडिपेंडेंट क्लाउज जो होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट क्लाउज, कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, है ना। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लाउज। तो क्लाउज जो होते हैं स्पेशली वो सेंटेंस के ही एक पार्ट होते हैं, बट विच क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, यू नो, इंडिपेंडेंट क्लाउज जो होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, बट डिपेंडेंट क्लाउज जो होते हैं वो एक सेंटेंस के पार्ट होते हैं, बिकॉज कि वो डिपेंडेंट होते हैं ना, उनको एक एक और सेंटेंस चाहिए कंप्लीट करने के लिए, एक और क्लाउज की ज़रूरत होती है कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो एक्चुअली में एक कंप्लीट सेंस देते हैं, वो एक सेंटेंस होते हैं, ठीक है, और इन्हें कोई भी दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मोना स्विच्ड ऑन द लाइट, मोना ने लाइट को स्विच ऑन किया, मोना स्विच्ड ऑन द लाइट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाउ लेट्स सी दैट डिपेंडेंट क्लॉज, it is a group of words with subject verb combination and does not convey full meaning. dependent clause क्या होते हैं, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें भी होता है, बट देयर इज अ देयर इन दिस सेंटेंस, इन दिस क्लाउज, इट डज नॉट कन्वे फुल मीनिंग, ये जो है फुल मीनिंग क्रिएट नहीं करते हैं। दैट मीन्स जब इन्हें यूज़ किया जाता है, सेपरेटली रखा जाता है, इट डज नॉट गिव द कंप्लीट मीनिंग, सो इट इज़ नॉट यूज्ड एज अ सेंटेंस, इसलिए हमें इसे सेंटेंस के फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। दैट मीन्स ये अपने आप में एक सेंटेंस नहीं होते हैं। क्लियर? व्हेन आई वॉज डार्क, व्हेन आई वॉज डार्क, इट हैज़ ए सब्जेक्ट एंड वर्ब, ओके, इट ऑल्सो अ मीनिंगफुल ग्रुप, but it lacks the entire sense, okay, that when it was dark, then what happened, we want to know what happened after that. So that you so if we say that Mona switched on the light when it was dark, Mona switched on the light when it was dark, मोना ने लाइट स्विच ऑन किया जब अंधेरा हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए डिपेंडेंट ये क्लाउज हैं, तो डिपेंडेंट क्लाउज को जब हम लोग एक इंडिपेंडेंट क्लाउज के साथ ऐड करते हैं तभी ये क्या देते हैं, कंप्लीट सेंस देते हैं, है ना। सिमिलरली, सो डैट यू मे पास, अब ये देखिए ये भी एक क्लाउज है, बट इट डज़ नॉट गिव एनी सेंस, ये कोई भी सेंस नहीं दे रहा, कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा, हालांकि इसका अपना खुद का मीनिंग है लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है यहाँ पे। लेकिन जब इसी डिपेंडेंट क्लाउज को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लाउज के साथ यूज़ करते हैं, नाउ इट गिव्स द सेंस, इट गिव्स द इंटायर सेंस।
Now let's see the meaning. You should work hard so that you may pass. You should work hard. तुम्हें मेहनत करना चाहिए, तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहिए, so that you may pass, ताकि तुम पास हो सको. So I think यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा. Now come to the difference between phrase and clause. Students, it's a very clear difference between phrase and clause. Like a clause has a subject verb combination. Clause में subject verb combination होते हैं, whereas a phrase does not have a subject verb combination. Phrase में हम लोगों ने देखा कि phrase में subject verb combination नहीं होता है. For example, in a corner there is no subject, okay, no verb. So in this is only a group of word, so it's a phrase, okay. But let's see this example. A cat is sitting in a corner. Here in this sentence, a cat is a subject, is sitting as a verb. So this is a subject verb combination. So I think that this is a clause, whereas this is a phrase. Now let's see the another example. On this phase, this is phrase because this is a group of word and it does not have any subject and verb. On the other hand, honesty is written on his face. In this clause, there is a subject and verb also. So we can say that this is a clause. So it's a very clear difference. You can easily find out which one is a clause and which one is a phrase. Similar, same thing when there is a group of words and does not have any subject verb, it is a phrase. And when a group of words having a subject and a verb, it is called clause. So I hope you understand all these phrases and clauses and the difference between phrase and clause. Now come to the exercise homework. This is some work for you at your home. So you have to, in the first question, you have to identify and write which of the following are phrase and which are clauses. So you can easily find out which one is phrase and clause in the first sentence, down the road. Okay, it is very clear that it's a phrase. A swollen leg, it's a very clear that there is no subject, no verb. So this group of words is a phrase. But when we see this group of words, although they were late, in this group of words there is a subject, there is a verb. So this is an example of clause. Now let's see the another question. Pick out the adjective phrase from the sentence given below. So in these sentences you have to find out which one is an adjective phrase, that means which phrase describes a noun. Okay, I would like to say you one important thing that, okay, an adjective phrase must be placed close to the noun. Okay, they describe. एडजेक्टिव फ्रेज जो होते हैं वो नाउन के बिल्कुल क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं. जस्ट सी द वन क्वेश्चन. गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ ऑनेस्टी. देखिए यहाँ पे जो है नाउन है, नाउन के ठीक यहाँ पे आप देखिए लिया हुआ है क्या, ऑफ ऑनेस्टी. तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज. तो गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ ऑनेस्टी. तो एडजेक्टिव फ्रेज जो होते हैं वो नॉन से बिल्कुल क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं. 26 January is a day of great importance. Okay, so day is a noun and here of great importance is an adjective phrase. So I hope students clearly you can understand all the things whatever I have explained you. So I will see you soon in my next video. Stay blessed. Thank you.